And the last question that the examiner can ask, which can be really tricky to answer, that what is more difficult, to come up with a new idea or to get it into practice or implement it. आपको क्या लगता है मुश्किल? आप कमेंट सेक्शन में अपना सैम्पल आंसर शेयर कीजिए. एंड व्हाट आई पर्सनली थिंक इज कमिंग. Hi friends, and how are you doing today? I hope you are preparing the cue cards and following the videos that I have shared with you recently. और जैसे ही मैंने कहा है कि आप अगर ध्यान से देखें तो चाहे 2 साल या 4 साल पुरानी, आपको मेरी वीडियो हर एक टॉपिक पे ज़रूर नज़र आएगी. और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट आई वुड लव टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो टुडे, और वो है अ पर्सन हु ऑलवेज हैव इंटरेस्टिंग आइडियाज़. ये क्यू कार्ड शायद आपको किसी बुक में नज़र ना आए, लेकिन बिल्कुल रीसेंट जो IELTS स्पीकिंग टेस्ट हुआ है हमारे एक स्टूडेंट का, उससे एग्जामिनर ने यही क्यू कार्ड पूछा है. सो फॉर दैट रीज़न आई एम शेयरिंग इट विद यू एंड रिकमेंडिंग यू कि मेक श्योर एग्ज़ाम से पहले आप ये क्यू कार्ड प्रिपेयर करके जाएँ. So the question is, talk about a person who always has interesting idea, who the person is, how well you or how you know the person, what kind of idea he has and why you think he always have interesting ideas. तो चॉइस इज़ योर्स. आप किसी के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने किसी स्कूल टीचर के बारे में बात कर सकते हैं जिसके आइडियाज़ बहुत इनोवेटिव होते हैं, बहुत अलग तरीके से हमें पढ़ाता है और नए नए तरीके वो इंट्रोड्यूस करता रहता है टीचिंग मेथडोलॉजीज़ में. और सिर्फ स्कूल में ही नहीं, आई मीन्स स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ही नहीं, स्कूल को ओवरऑल नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए, ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो स्कूल को ग्रो करने के लिए भी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ शेयर करता है. लेकिन आपने शायद मेरा ये वीडियो देखा होगा, उसका लिंक यहाँ पर है. सेम क्यू कार्ड पहले भी काफ़ी टाइम पहले पूछा गया था, तो ये आपके लिए वीडियो अवेलेबल है. आप चाहें तो इससे लिंक को क्लिक कीजिए, आपको इस वीडियो के एंड पे भी वे स्क्रीन कार्ड के फॉर्म में नज़र आ जाएगा, आप उसे क्लिक कर लेना. तब तक मेरी बात सुनते रहो यार. इट इज़ अबाउट योर ग्रैंडफादर हु इज़ रिटायर्ड प्रिंसिपल, लेक्चरर, जो बहुत ही वेल लर्नड पर्सन हैं और उनके आइडियाज़ भी बहुत यूनिक होते हैं. ना सिर्फ एक फैमिली को वो अपने आइडियाज़ के साथ हर एक किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको नए नए आइडियाज़ देते हैं टू ग्रो एंड टू इम्प्रूव योर लर्निंग, बल्कि वो हमारे सोसाइटी के हेड भी हैं, जैसे पंजाबी सरपंच कह देने ਆਪਾਂ. सो वो हर एक किसी दी प्रॉब्लम ਨੂੰ अपने इंटरेस्टिंग आइडियाज़ ਦੇ ਨਾਲ ना सिर्फ रिजॉल्व कर दिया, बट दे ऑलवेज हैव सम आइडियाज़ टू bring improvement in the area. There is one instance where there was a conflict between the two different groups of different religion, and they were presenting के जो एक unclaimed land है आपके एरिया में, वो कह रहे थे कि इस पर्पज़ से यूज़ होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदूज़ कह रहे थे टेंपल बनाना है, सिख्स कह रहे थे यहाँ पे हमें गुरुद्वारा बनाना है, या मुस्लिम कह रहे थे मस्जिद बनानी है. एंड ही गेव द आइडिया व्हाई नॉट टू बिल्ड अ लाइब्रेरी वेयर एवरीवन कुड विजिट एंड स्टडी. और यहाँ पे आप अपने रिलीजन के होली बुक्स भी रख सकते हो जिसे पढ़ के लोग ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं. समथिंग लाइक दैट, देयर इज़ नो लिमिट टू. लेकिन आज के वीडियो में कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ इसके बहुत ही ट्रिकी फॉलोअप्स और उसके सैम्पल. देखते हैं कि इसके फॉलोअप्स क्या हो सकते हैं. पहला फॉलोअप, व्हेन डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन शुड स्टार्ट टू हैव देयर ओन ओपिनियंस? सो इट्स योर चॉइस व्हाट यू वांट टू से. Well, I don't think there is any certain age, because we have seen many very young children having innovative and unique ideas, and their ideas can certainly surprise the adults. So I guess from a very young age they should be encouraged to share their ideas. Or you can say, I guess the right time for the same would be the teenage, because by this age they have bit of experience of life and they are heading towards adulthood. So sharing or forming new opinions would help them in a better way in future. Another question on this topic could be, are children's opinion generally influenced by their parents?
Once again, the answer can go both way, but I highly recommend follow up में आप दोनों साइड के आंसर मत दिया करो, क्योंकि आंसर बहुत लेंथी हो जाता है. आप स्पेसिफिकली या प्रिसाइसली किसी एक को डेवलप नहीं कर पाते हो, हौच पौच हो जाता है. बेटर कि आप किसी एक साइड को पकड़िए, उसका प्रेजेंट कीजिए. फॉर एग्जांपल, आई गेस it has a strong impact on children's mind because children often see the world or that much of the world that their parents show them. At the same time, they are influenced the way their parents think and they present their ideas. So that's what is generally seen, that in real life most children are influenced by the ideas of the parents. Iske opposite, I tend to differ because these days parents remain overoccupied. They do not spend too much time with them. In fact, children at school are surrounded by their friends or their teachers, and at home they are under the influence of technology. For example, they play games, surf internet, watch movies. So these things help children to form their opinions or ideas rather than parents, right? So next question that the examiner can ask you is, how do inventors or philosophers come up with new ideas? तो ये चीज़ तो हम नोटिस करते हैं कि ये जो लोग होते हैं ना, थोड़े से डिफरेंट होते हैं. इनका दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में से ही एक नए आइडियाज़ ले आते हैं. तो अगर हम इसका एक सैम्पल आंसर बनाएं तो आई मस्ट से दैट people, the philosopher or the inventors, they have a very different viewpoint, or they perceive the things in a different way, which often become a motivation or inspiration for them, because they want to do the things differently that make the work easier and approachable. And that's the reason why these are the people come up with the unique ideas to improve the society. Another question that the examiner may ask you is, should workers or employees be encouraged to share their ideas or views? And of course, the answer has to be positive. Absolutely, it is very important. Organizations motivate their employees to share their opinions, because sometimes their opinions or their unique ideas can bring a huge change in the working practices, or can take the organization to the heights of success. And that's the reason why, if I talk about companies like Reliance, Tata and others, which are very successful companies, are just because they motivate their employees to share their ideas or opinions. And the last question that the examiner can ask, which can be really tricky to answer, that what is more difficult, to come up with a new idea or to get it into practice or implement it? आपको क्या लगता है मुश्किल? आप कमेंट सेक्शन में अपना सैम्पल आंसर शेयर कीजिए. एंड व्हाट आई पर्सनली थिंक इज, coming up with a new idea is not that difficult, because I know many who are brilliant and have some very unique ideas on their mind, but they really do not know how to put it into practice. They really do not know who should they share or consult with, and how they can actually make their ideas working. For that reason, I can say that the latter is more difficult than the former. And that's it. I hope you will definitely prepare this cue card before you sit in the exam, else you can be in a great trouble. Thanks for watching the video, and bye bye for now.